is leading to many kind of problems in India. What kind of inflations are there, we have also studied. Now in this class we will study about the public finance. What is public finance? Oh, it is the study of government's revenue and expenditure within a state or within a national territory. तो किसी भी देश में गवर्नमेंट के द्वारा जो भी खर्चा हो रहा है उनका लेखा जोखा, उनका ब्यौरा जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द पब्लिक फाइनेंस और द पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट द पब्लिक डेट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी, एंड पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 sections. So how it is broadly classified? It is classified into 5 sections of public revenue, in which we discuss about budget, budgetary mechanism, taxes, direct and indirect. Then we study public expenditure by the budgetary measures and finance commissions. We study public debt over the government of India from foreign countries. Then we study fiscal policy, under which government makes policy measures for improvement of the infrastructure, revenue collection, and different sectors. We see financial administrations in terms of allocation of fund functions and functionaries, that is triple F, throughout the territory of India. So what are the important features of public finance? Public finance comprises of steady state economic growth, which is showing the economic growth as a different levels. Somewhere we see in COVID scenario it was declining, somewhere we saw it was rising. We also discuss about the price stability. So government also take measures under RBI and its monetary committees to deal with the stability of price, to measure inflation and maintain optimum level of growth and development. We also saw the economic stability, that how economy functions within a country through different states and union territories to bring about many changes in its larger part of economic scenario. We also study equitable distribution of wealth to reduce inequalities and to meet the sustainable development goal targets. We also saw the proper allocation of resources to development of different sectors, primary, secondary and tertiary and quaternary sectors development, and different sectors under which MSMEs are there, 8 core sectors are there, and other sectors of economies to be developed. You also see the balanced development measures, which is taken under the budgetary measure of government of India. फिर हम देखते हैं promotion of export, how much production to be done by indigenous companies so that export led growth to be promoted. India was considered to be import led growth, consumption based economy. अब कंजम्पशन से हमें सरप्लस में जाना है, and we need to have export based growth. We also need to have infrastructural development. So how infrastructures in terms of ports, airports, railways, roadways, waterways, and such infrastructures should be made robust so that throughout the year communication can take place, whether it's rainy season or you see in winters. In rainy season we have heavy rainfall and flooding situation, so roads are disturbed, railways are disturbed. So government is pushing its measures to overtake these infrastructures
So these all sectors combine together to form the levels of public finance. We also see that the India is ranked much higher fiscal deficit and debt than other emerging market economies. In the 8 fiscal indicators, अब ये 8 indicators को आप याद रखोगे for your coming examination. That in the fiscal deficit, India's ratio was 2.6, other emerging market was 1% only. In government resources, India's average was 1, other emerging market 0.8. So government revenue collection is showing a good coverage throughout the कोविड सिनेरियो. कोविड के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ की डिक्लाइनिंग हो गई है in terms of revenue collection. Then we see the cost and borrowings, that is 1.2% in India, and other emerging countries it's around 1%. Then comes the interest payment by various borrowers and loan takers. So interest payment has been recovered to 1.8. As we discussed in last class that there was insolvency bankruptcy code, there was SARFIC Act, there was NCLAT tribunal, debt recovery tribunal, and these measures leads to reduction in non-performing assets and therefore interest payment improved. Also we see reduction in the external debt. So debt from outside the country from IMF, World Bank and other such agencies has been reduced to 2.6%. Tax to GDP ratio has been improved to 1%. That means people are paying more taxes and they are open and they are being committed towards the growth of country. Then debt to GDP ratio is also improving 1.5%, and government expenditure remains almost same to 1%. We will discuss this thing in this class. So there is a cartoon which shows a donkey has been debt ridden and deficit ridden. This was the condition of India's economy in which year 1990s, when there was balance of payment crisis. तो उसके बाद हमने देखा कि there was Narsimhan committee first, who proved to have disciplined growth in the banking and other infrastructure. Then we saw N.K. Singh committee, who moved forward with his aim for the Fiscal Responsibility and Budgetary Management Act of 2003 and setting of independent fiscal council to keep tabs on the management of public debt. So independent fiscal council की बात कर रहे हैं N.K. Singh. Then what we saw that the projection of government falls shortly by considering 10% and the funds cut in the middle of the year. 10% की fund cutting हुई. Then we saw कि FRBM Act आया. Then it makes prudency in the fiscal practices. It makes disciplined fiscal measures for the fiscal deficit and revenue deficit in main full development of challenge-ridden India. It brings forward the transparency and accountability measures as a measure of good governance for the Indian system. Then we saw international experiences which suggest the quality of debate on public finance that in turn helps to build public opinion in favor of fiscal deficit. सो फिस्कल काउंसिल कैसे हेल्प कर सकता था इंडियन सिस्टम को इम्प्रूव करने में. फिस्कल काउंसिल प्रोवाइड्स द बजट प्रपोजल एंड फॉरकास्ट द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया. तो ये प्रोबेबिलिस्टिक इम्प्रूवमेंट को फॉरकास्ट करता है. फिस्कल काउंसिल रिपोर्ट्स द पार्लियामेंट्री रिगार्डिंग द प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फोरकास्टेज इन द बजट. कितना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बजट फॉरकास्ट का, तो इसके लिए फाइनेंशियल काउंसिल बनाया गया.
Now you see, would it lead to boost the global confidence over India, to boost the crediting of government fiscal commitment? Yes. Why? Because when government is making expenditures, it is taking lots of loans from IMF and World Bank. But India reduced the loans from these global agencies and developed its own expenditure method. Then, by applying FRBM measures, saw fiscal consolidation हो गया. Fiscal situation was strengthened through the 14th Finance Commission report, and we saw FRBM as functioning. So it makes the executive more responsible in the budget preparation. जो ministries हैं, including bureaucrats, secretariat, they become more robust and answerable to these events in the fiscal bodies. नो पब्लिक रेवेन्यू होता क्या है और काम कैसे करता है? Public revenue includes all the incomes and the receipts of government through various sources. बहुत सारे सोर्स से जो गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट करती है, सो उसको इंक्लूड करता है पब्लिक सिस्टम में, कि पब्लिक के लिए वो फंड कैसे यूटिलाइज हो, क्योंकि फंड मूव्स इन अ साइकिल. मनी आई गवर्नमेंट के पास थ्रू टैक्सेस, then they should be spent on public welfare, because we have welfare socialist government, and then these funds are being used to put up the debts which are earned by the governments of India. And there are earned revenues, which is a kind of revenue received from the assured sources which kept contemplated disposal of government ownership. गवर्नमेंट की ओनरशिप में जो डिस्पोजल दिया गया है उसको हम बोलते हैं अर्न रेवेन्यूज, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उठाया है. एंड व्हाट आर अनअर्न्ड रेवेन्यूज? दीज आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज. सो अनअर्न्ड रेवेन्यूज इज मोबिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पेई, दैट इज टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी वगैरह आ गए. देन फाइन्स, जो भी मोटरसाइकिल आप लेके जाते हो तो फाइन लगती है विदाउट हेलमेट, लेवाइज, इस चीट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारी चीज़ें अनअर्न्ड रेवेन्यू के पार्ट हैं. ये यूपीएससी ने पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. नाउ टैक्स रेवेन्यू आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स. ध्यान से सुनिए और समझिए. Direct tax, which is a type of direct tax borne by a person in a household, that is individually taken tax. ठीक है, on an income of government servant such as a government teacher, doctor or officer, तो उनके individual earning पे yearly जो tax लगता है, that is direct tax. And there is income tax, which is seen on the people by the central government. Then there is corporation tax, which is charged on the profit of the companies under the Companies Act. Companies Act के through जो भी chargeable tax होता है over the corporate sector, over the companies, is called as companies tax और कॉरपोरेशन टैक्स. अभी ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स की बात हो रही है अराउंड 15%, बट उससे पहले हम देखेंगे मैट. सो मैट इज चार्ज ऑन कंपनी विच escaped द कॉरपोरेशन टैक्स नेट बाय यूजिंग प्रोविजंस ऑफ एक्सेम्पशन, डिडक्शन, इंसेंटिव्स, डिप्रिसिएशन. इन सारी चीज़ों से जो कंपनियां बचती हैं उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स चार्ज किया जाता है. देन वी विल सी what is wealth tax. Tax divide on net worth of individual, again on individual pocket. इंडिविजुअल के ऊपर डायरेक्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स लगते हैं. Then comes indirect tax,
central excise duty within the country levied by central excise duty. So जो भी कमोडिटीज़, जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बने हैं, है ना, साबुन, सर्फ, तेल, ऑयल प्राइसेस and goods, consumer durables, items of daily consumption, toothbrush, paste, whatever FMCG produce or produced inside the domestic market that are charged with the indirect taxes and excise duty लगती हैं liquor और drugs पे, यानी medicines and alcoholic products are charged by excise duty and are somehow exempted from this. What is custom duty? कस्टम डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है IRS ऑफिसर्स की. कस्टम ड्यूटी is taxed imposed on the commodities imported into India. That is a import duty. कस्टम ड्यूटी को import duty बोल सकते हैं. और जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं वो भी called as export duty and broadly they are called as custom duty. So since imposing the duties on exports reduces the competitive position on the country, government withdrew export duties. In recent time, there has been considerable increase in revenue from import duties because of heavy imports of iron, steel, petroleum products, chemicals, etc. इन सब की heavy import हुई है इंडिया में, क्योंकि after LPG we saw many policies of setting manufacturing units in India. Even the Modi government 2014 raised Startup India, Stand Up India. इसके थ्रू भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में सेट हुए एंड दैट लेड्स टू कर्ब द इंपोर्ट्स. सो WTO आ गई उसके बीच. WTO को बाद में पढ़ेंगे. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इट हैज़ डिफरेंट बॉक्सेस, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ऐसे करके, जिनमें सब्सिडीज़ की क्राइटेरिया होती है. सो कस्टम ड्यूटी हैज़ बीन टारगेटेड फॉर द रेवेन्यू जनरेशन सिंस इंडिपेंडेंस. तो इंडिपेंडेंस के बाद से कस्टम ड्यूटीज चली आ रही हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आइटम से. देन कम्स दिस सर्विस टैक्स. अब मैन्युफैक्चरिंग पे क्या लग गई? कस्टम ड्यूटी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. देन कम्स दी सर्विस टैक्स. व्हाट इज सर्विस टैक्स? टैक्स imposed on person who avails any specific service introduced in 94-95 and address asymmetric distortionary treatment of goods services in the tax framework and is widened the tax net. तो हम देखते हैं कि जब टैक्सेस चार्ज होते हैं तो बहुत सारी एसिमेट्रिसिटी मिलती थी. many items of same basis were charged differently, so there were distortions found. तो उसके लिए हमने देखा कि टैक्स में गैप बहुत ही वाइडेंड हो गया. देन there was taxation raised from 3 items 94-95 to 100 items 19 items. आफ्टर 1990s में क्या हो गया? LPG लागू हो गए, तो लिबरलाइज्ड हो रहा है मार्केट. बट वी सॉ न्यू फॉरेन कंपनीज इंटरिंग इनटू इंडियन मार्केट. अब जो फॉरेन कंपनीज होगी उनको हम क्यों छूट देंगे? देन गवर्नमेंट चार्ज्ड 119 items in 2011-12 for the tax on the services. तो इंटरनेट भी शुरू हो गया था. इंटरनेट से ई-कॉमर्स शुरू हो गए, है ना. आगे हम पढ़ेंगे कि गाफा कैसे आ गया. गूगल, अमेज़न, फेसबुक, एप्पल, उनके प्रोडक्ट्स भी आने लगे. देन वी सॉ चेंज इन द बजट ऑफ 2012. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित हुई एंड दैट इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज इन इंडिया and to negative list and this taxation of services under GST. अब हम देख रहे हैं कि मैट भी चल रहा था, कहीं कहीं पे वैट लग जा रहा था. तो गवर्नमेंट भी कंफ्यूज थी कि कैसे हम इन टैक्स इशूज़ को रिजॉल्व करें. देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ GST which was almost implemented in every developed country. स्विट्ज़रलैंड, UK, USA, सभी जगह
ए यूनिफॉर्म टैक्स वाज यूज्ड, उसको कहते थे जीएसटी, जिसमें कि कैस्केडिंग होती थी ऑन दी डिफरेंट वैल्यूज़। तो ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन होती थी, क्राइटेरिया बनता था और उनकी टैक्सेशंस होती थी। सो वैल्यू एडेड टैक्स और वैट वाज देयर इन फ्रांस। अब जीएसटी के पहले ये चीज़ें चल रही हैं, तो पहले क्या है, वैट चल रहा है। फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू द फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में जो भी चीज़ें आ रही हैं, दैट were taken under the value added tax. So VAT was on all the inputs and can be deducted from the excise paid on the output. So taxes are levied on the values added to each stage in a production process. VAT system on taxation adopted in more than 150 countries including Australia, Canada, USA. So it ensures the tax neutrality. अब वैट के अंदर क्या कहा जा रहा था कि ये बायस टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग इट्स लिवरेज बट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग ईज ऑन द टैक्सेस, देयरफॉर वैट इज़ बेटर देन अदर टैक्सेस। तो इंडिया में भी वैट को ले आया गया 2005 में। तो इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं एक्चुअली? डायरेक्ट टैक्स हमने देखा सैलरीड इंडिविजुअल्स पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लेती है, वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उन्हें डिडक्शन के बाद कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स आर चार्ज ऑन दी सर्विसेज। अब जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, एनी प्रोडक्ट और कमोडिटीज़ और सर्विसेज इन एजुकेशन, बैंकिंग ऐसे सेक्टर्स पे, सच एज वैल्यू एडेड टैक्स जो कि ऐड होने लगा प्रोडक्ट्स पे, देन सेंट्रल सेल्स टैक्स ऑन द सेल्स ऑफ एनी कमोडिटीज़ आउटसाइड इंडिया, then services tax comprising of different services of education, health, market, commodities. Then comes excise duty on export and import and custom duty. तो अब देखते हैं कि जीएसटी की बात शुरू हो चुकी है। अब लोगों को लग रहा है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया, ताकि एक टैक्स का मॉडल अप्लाई किया जा सके। थोड़ा सा हम समझते हैं जीएसटी क्या हो रहा है। So GST has a significant step and implemented by Government of India on 1st July 2017 by the GST Act लाया गया द मिडनाइट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन किया गया रात को 12 बजे। आपको याद होगा अरुण जेटली वॉज प्रेजेंटिंग दैट सेशन विद प्रधानमंत्री मोदी, Amit Shah ji and all ministers and every people were present in the parliament in the midnight. So GST was brought on 1st July 2017 by subsuming large number of central and state taxes into a single central tax. It is central GST, and also it cascaded the other tax, removing double taxation DTAA to the central government tax, and also removes the federal taxes between the states and created state GST SGST. And further, from consumers point of view, it brings the advantage of reduction of heavy tax burden. So the prices of many kinds of FMCG products rise around 30% were reduced to 15%. Then GST also expected to make Indian products competitive in domestic and international markets. तो जीएसटी के चलते क्या होना था कि जो प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो। अंडर ग्लोबलाइज्ड सिनेरियो इंडिया शुड होलिस्टिकली कवर द वर्चुअल एंड डिस्टेंट मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। देन दिस हैज़ अ ट्रांसपेरेंट कैरेक्टर क्योंकि ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो रही है, and government as well as companies are getting monitoring of this tax at every level. तो जीएसटी एक ओपन लेवल का टैक्स हो गया। सो
जीएसटी के बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं. First, it encouraged its debate for GST raising under the Atal Bihari Vajpayee, the late Prime Minister of India, who put forth GST by setting up empowered committee. तो पहली कमेटी 2000 में लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा बनाई गई. In 2006 we saw announcement of GST for the first time, जो कि अनाउंस किया गया फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1 अप्रैल 2010. In 2009 we saw first discussion paper laid by the empowered committee. जो empowered committee है उसने पेपर सबमिट कर दिया. 2010 में ये पेपर टेबल पे आ गया ऑन 1 अप्रैल कि अब एक्ट बनना चाहिए. देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 115 इंट्रोड्यूस्ड सब्सिक्वेंटली, जो कि कोलैप्स कर गई. तो जीएसटी फेल हो गया 2011 में. 2011 में जीएसटी की बात हो रही है. देन जीएसटीएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, अ प्राइवेट कंपनी वाज सेट टू प्रोवाइड इट बैकबोन टू जीएसटी. जीएसटी के लिए अब लोगों के मन में डर हो रहा था, व्यापारी वर्ग डरे हुए थे, तो जीएसटी नेटवर्क लाया गया. देन इन 2014 as the new government came with full majority, we saw constitutional amendment bill 122nd and we saw constitutional amendment act of 101st, which brings the GST Act on the real platform. And September 1st GST Council was held a meeting, and on March 2017 there was GST Council recommendation on three bases of GST, that is central GST, state GST and union territory GST. And compensation cess act was to be followed, कि अगर जीएसटी से कुछ बच जा रहा है देन इट शुड बी प्रोवाइडेड अंडर द कंपनसेशन सेस एक्ट. So the GST, CGST, IGST and Union Territory Compensation Act was passed April 2007 midnight session, joint session of Parliament in April 2017 में ये सारे एक्ट पास हो गए जिससे कि जीएसटी ग्राउंड लेवल पे आ गया. नाउ जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स रेट्स एंड रूल्स. अब ये काउंसिल क्या बता रहा है? रेट्स बता रहा है कि कैसे कैस्केडेड टैक्स लग रहे हैं, और इनके रूल्स क्या होंगे जो डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट प्रोडक्ट्स में लगेंगे. सो ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पास देयर स्टेट जीएसटी. अब जम्मू एंड कश्मीर ने स्टेट जीएसटी पास नहीं किया. देन वी सॉ बाइफर्केशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू पार्ट्स, Union Territory of Jammu and Kashmir, Union Territory of Leh and Ladakh, without legislation and with legislation. Then we see different UT GST imposed in Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh. Then on 30 June 2016, 18 GST Council was met, and 15 July 2017 GST launched first national market. 8th July 2017 State GST Act passed by Jammu and Kashmir, and CGST and integrated GST, a new model including state and center, was imposed under IGST with an ordinance promulgated to extend the GST to Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh. So that leads to economic integration of the country in a single central and state tax in an integrated model of GST. Now you are understanding how GST emerged in India. Now let us look at some of the important parts of GST which was evolving since the time of implementation as a structure. So you see different people, manufacturers and market-based entities facing challenges for the implementation of GST. So GST में कैस्केडेड स्ट्रक्चर हो गया. 5%, 12%, 18%, 28%,
28% plus cess. Some items were exempted such as alcohol and drugs जो कि एक्साइज ड्यूटी लगती थी. And this question was asked in UPSC in year 2017 prelims. So there has been no shortcoming which has been resulted into erosion of base and continued distortion. तो distortions और erosion of गवर्नमेंट टैक्सेस हो रहे थे, इवेड कर रहे थे लोग टैक्स को, है ना, काउंटर फिटिंग हो रही थी, डीटीए हो रहा था, ब्लैक मनी इलिसिट करेंसी की इश्यूज चल रही थी. तो हमने एक साथ देखा नोटबंदी हो गई, देर वॉज बैंड ऑन दी ओल्ड करेंसीज. सो जीडीपी के हिसाब से हम देखते हैं कि 50% ऑफ आइटम्स इन सीपीआई बास्केट वेयर नैरोड इन द बेस एंड exclusion of several items from consumption from the base was seen. Then multiplicity of rates which enhance the administration and compliance cost enables misclassification. अब misclassification भी हो रहा था, जो भी cost हो रहे थे different items के, that leads to distortions and in some cases cause the inverted duty structure. Inverted duty structure कैसे हो रहा है? जो ड्यूटी लगनी चाहिए थी और जिससे टैक्स आना चाहिए वो और भी इन्वर्ट हो रही है कि टैक्स ही और रुक जा रहे थे, छुप जा रहे थे. देन कम्स दी जीएसटी डिसफंक्शंस in technological platform which resulted into arbitrary integrated GST allocation and has caused delayed in the export of GST funds. So there were loopholes in the GST forms which have made invoice making difficult and have given rise to the fake invoice in industry. तो लोग फेक इनवॉइस भी बनाने लगे. जो कंपनीज थी वो इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी करने के लिए फेक इनवॉइस बनाने लगे. Then comes the GST Act which do not provide the compensation to the cess if state revenue fall at a growth of 14%. अब स्टेट का रेवेन्यू अगर फॉल कर रहा है तो जीएसटी को कोई कंपनसेशन जीएसटी के थ्रू नहीं मिल रहा था, विच लीड्स टू फॉल इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टैक्स स्ट्रक्चर. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है? टैक्स स्ट्रक्चर मिल रहा था जो कि जीएसटी के नहीं एप्लीकेबल होने से कहीं कहीं फॉल कर रहा था. दैट लीड्स टू प्रॉब्लम इन द फेडरलिज्म स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज फेडरलिज्म? The relation between center and state in terms of governance, taxes and the distribution of revenues. So federal state में central government rule करती है, but states is also having their shares under 7th schedule, state list, union list and concurrent list. तो जीएसटी में ये सारे challenges दिखने लगे. But if cess fell short, there is no mechanism to ensure the states should get the cess. Now इससे क्या होने लगा? States के मन में टेंशन आ गई कि there is corruption with the central government because central government is taking larger part of the profit, and through state shares declining that led to slowing of economy. Tax rates were reduced एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रॉड शुरू हो गए जीएसटी में. तो अब ये नए चैलेंजेस आ गए जीएसटी के आने के बाद. नाउ ओवरऑल इम्पैक्ट वाज सीन इन सितंबर एंड अक्टूबर 2019, जिससे कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्लो हो गया, टैक्स फ्लॉज बढ़ गए. इन 2017-18 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंडिया सीएजी जो होते हैं भारत के Comptroller and Auditor General, who shows in his report that GST declined by 10% for the subsumed taxes and compared to the previous year. Then compared to the budget estimate on 18-19, central government has a GST collection shortfall of 2 trillion. 2018-19 में 2 ट्रिलियन टैक्स का घाटा लग गया गवर्नमेंट को. एंड विद जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ फॉलिंग, स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट एनी जीएसटी कंपनसेशन. स्टेट को भी लॉस दिखने को मिल रहा है क्योंकि स्टेट्स की जीएसटी कंपनसेशन नहीं हो पा रही है, जो भी लॉस कर जा रहे हैं
in collection to the central government, and the chances of getting full compensation in near future remains oblique. अब फ्यूचर में ये टैक्स कंपनसेट हो जाएंगे कि नहीं, ये भी एक बोन ऑफ कंटेंशन है. सो नाउ व्हाट वाज द कॉज ऑफ जीएसटी डिक्लाइन. जीएसटी में सिंप्लिसिटी लाएगी एंड रैशनलाइजेशन लाया गया. स्टैंडर्ड जीएसटी रेट्स 12%, 18% in different categories to be merged at 15%, 14 to 16% के रेंज पे, जो कि ग्लोबल टैक्स रेंज है, तो उसके बीच में लाने की बात हुई. देन वी सॉ अ लोअर रेट. द टर्नओवर वुड हैव बी हायर ड्यू टू द इंक्रीज डिमांड एंड द लॉस ऑफ रेवेन्यू विल बी लोअर. सो जैसे ही टर्नओवर हायर होगी, लॉस ऑफ रेवेन्यू कंपेंसेट हो जाएगा. We saw ITC company fraud by increasing the development of business intelligence system. Indian Tobacco Company, we saw a fraudulent system. Then categorized invoice matching system was launched. अब क्या किया गया कि invoice system जो टैक्स में बन रहा था, which was generated online, should be categorically imaged. So 100% of invoice system was to be matched under a tax rate of rupees 10,000. तो 10,000 की टैक्स रेट को इनवॉइस में मैच करना ही था. सो अनदर रिफॉर्म्स दैट वाज शोन, इम्प्रूव टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म्स, जिससे कि जीएसटी काउंसिल शुड टेक केयर ऑफ द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी. रिडक्शन इन द exempted list of exemption goods and services should be pruned. Then only those that are difficult for tax of the administrative reasons should be exempted from 5% and move up to 12%. So there was rate differentiation from the extent of production and the elimination, and there was formulation of tax rates based on the consumption pattern along with ignores the employment potential from the sectors. और बहुत सारे सेक्टर्स में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी पोटेंशियल को, उनकी सैलरीज को ही मिनिमम दिखा दिया गया. सो दीज वेयर सम ऑफ द चेंजेस. देयर वाज नीड टू डू अवे विथ रेट डिफरेंशिएशन. डिफरेंट रेट्स जो आ रहे हैं जीएसटी में, उनके डिफरेंशिएशंस को इम्प्रूव करना था फॉर द सेम गुड्स ऑफ कमोडिटीज़. एक ही प्रकार के प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ जो मार्केट में जा रहे हैं, उनके लिए सेम रेट होना चाहिए, बट द रेट वेयर डिफरेंट एंड वेरियस रेट्स as per the use and value of the production should be eliminated. तो रेट्स जो कि प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पे लग रही थी, उनको भी लिमिट करने का बात किया गया इन द टर्म्स ऑफ जीएसटी. सो जीएसटी कहाँ कहाँ पे अप्लीकेबल है? जीएसटी वुड बी अप्लीकेबल in the goods and services against the present context of tax on the manufacturing or the sale of the goods or provision of the services. तो हम देखा कि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देयर इज़ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, देयर इज़ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. अब वो ट्रांसपोर्ट होके रेलवे से या रोडवेज से कहीं पे ले जाया गया इन अनदर स्टेट और अनदर कंट्री. देन स्टेट भी अपना टैक्स चार्ज कर रहे थे, दैट वाज कॉल्ड एज स्टेट जीएसटी. एंड डिस्पाइट सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स ले ही रही थी, सीजीएसटी, है ना.